Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. My name is Basim Raza, and I'm a research associate at Center for Launch Security. Today, we're going to talk about the recent India-Pakistan crisis. Marshal Farooq Habib is a former Vice Chief of Air Staff of the Pakistan Air Force with 36 years of distinguished service as a fighter pilot and a CDS commander. He has held key command and staff positions, and he's an expert of national security and public policy. Welcome, sir. We have with us Ambassador Babar Amin. Ambassador Babar Amin is a career diplomat who served in the Foreign Service of Pakistan for over 33 years. His distinguished postings include Ambassador to Norway, High Commissioner to Australia, and multiple other accreditations, such as Pakistan's first national coordinator for the Shanghai Cooperation Organization. Welcome, sir. We also have with us Mr. Rahman Azhar. He's the Executive Director of the Center for Law and Security. So without further ado, I would like to start this webinar with a question from Sir Air Marshal Farooq. Sir, let's stay bilingual for the audience. Sir, ये जो recent हमारी skirmishes थी और crisis develop हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसके immediate outcomes को आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान के नजरिए से? With respect to Pakistan, the first thing is that the credibility of the country and also the credibility of the armed forces. Here we were fighting, it was not a war, but in a limited conflict, you can say, or a crisis. And we were attacked by a country which was larger in size and resources, and yet we proved as to them. In fact, we were able to overcome their design, and they were actually the ones who had to plead for a ceasefire. So in that sense, it's a gain for the credibility of the country as well as for the armed forces of Pakistan. It is also being a gelling factor for the whole country. I mean, the whole nation has come together, and we are rock solid, proving our worth as a country, as a nation, and that I think is a very important, a very effective outcome of this conflict that we have seen. Totally understood. I would like to move on to Sir Babar Amin. Sir, जब हम बात करें थर्ड पार्टी डिप्लोमेसी की, आप किस तरह से देखते हैं कि थर्ड पार्टी डिप्लोमेसी या बैक चैनल जो डिप्लोमेसी थी उसने किस अंदाज से काम किया सीज फायर को अचीव करने में? They will overpower them, and then it will be just walking into Pakistan. And this is what all the propaganda that India was also doing for its domestic audience. And unfortunately, even some of the international communities, stronger countries, or some of our friends also started to believe in that propaganda. So that by effectively deterring India conventionally and giving them a bloody nose, and also coming out victorious in this engagement, has blunted that Indian propaganda that conventionally Pakistan is no match for India. And now the conventional parity has been established with all the world now recognizing that. And then then the US is finally stepping in to have this ceasefire. Also shows that, they because of this conventional parity, they had to come in and stop this. And then also in the same vein, there was a dehyphenation of Pakistan and India. And you'd see that, many countries would ignore Pakistan and think that, they have to, in this region, they have to just engage with India. And that, India is the so-called net security provider for this region, and other countries do not matter. So, but that thinking and that kind of projection is no longer valid, and it has been thrown into the dustbin. So then
India had been boasting of being a much in a much higher defense power league. However, this has remained a pipe dream, and as the things of about 3 days war has effectively proved that India's claim of being in a much higher defense power league, actually it wanted a pre-5 status because of that higher defense power league to become a permanent member of United Nations Security Council. So that power that it was boasting and for which it wanted to be in the Security Council, that power has not proved effective. So we're going to move on to Yeah. that element. I just wanted to ask another question, which is a kind of a prerequisite to this one. So, Sir Farooq, we have seen, the way that India conducted all of this. So many defense experts, they've been talking about this, that this is the new normal now, that whenever a crisis will emerge between the two states, such kind of missile attacks, such kind of drone attacks, they're going to be a new normal. So in that regard, do you believe that we need a doctrinal review or any strategic signaling to prevent any such thing to happen in the future again? So actually, there are two parts of your question. First is about the character of the war. Sorry. We have always believed that there has been a shift in the character of war. Character of war is not a static thing. It continues to change. It is the nature of the war which remains constant. Okay, so we have seen this gradual transformation of the character of war over time. I mean, we had seen it in Ukraine and Russia war. We were also seeing it in somewhat diluted form in the Israel and Palestinian conflict, although you cannot call it a classic conflict as such. But there has been a shift towards technology. There has been a shift towards non-contact warfare, where you're utilizing the long vectors. There is no physical interaction of the forces together. So they're both fighting at quite a large distances. They are using long vectors. They are using cyber technology. They are using the electronic warfare, cyber warfare, information operations. So all these things are at play. But we are not seeing the direct physical contact of the adversaries. So this change in character of the warfare was already under study and was already being adopted by the Pakistan Armed Forces, especially the Air Force. And that is why that you've seen that in this changed scenario of a different character of war, we have emerged very successfully. We were able to reply back in the same coin as Indians started. Yes, you are right in the way that probably the future wars are going to be in the same fashion. We will not see very large scale land maneuvers. That time of land maneuvers is probably over. Land maneuvers. We may have small ones. So we were ready for that. The other part of the question relates to the deterrence. We had seen that India breached the deterrence which existed. But when you reply back in at a higher escalation ladder, at a higher rung of the ladder, probably then it is the re-establishment of the deterrence. So India stays deterred now. So until the time they again try to breach that deterrence, and of course, if they do, they'll be again met with a higher state of escalation by us, and then subsequently it should deter them again. So that deterrence has been reestablished, which was already there. So these are the two things probably that you were asking. Sir, in this regard, I have another question that connects to it, probably, because in the international discourses, we've seen a lot of times the mentioning of nuclear weapons again and again, nuclear threshold. Do you believe that the nuclear threshold, it is relatively thinner than before? No, it is not. I mean, Pakistan has never very clear cut, it has not defined the nuclear threshold in a clear cut fashion. Nobody does. But in some ambiguous ways, it has been already conveyed to India, and you have seen so many statements by different people at different cities, not an official statement, but it has been conveyed. It has not been lowered. I mean, India would like it to be lowered. It is there right there and then. And subsequently, we are ready with the nuclear forces. In fact, there was no nuclear posturing during all this scenario that happened this time, because we were able to tackle India at the conventional level, and that was enough. Exactly. I would also like to agree that nuclear threshold has not been lowered. Actually, it has been
reinforced and strengthened, and because Pakistan's doctrine in this regard is to have a credible minimum deterrence, nuclear deterrence, and then because during all this scenario, we stick to the conventional warfare and escalated to within that conventional domain. And then this is one of the propaganda of the Indians, that Pakistan has a very low nuclear threshold because Pakistan believes does not believe in no first use. And this is also one of the part of our nuclear doctrines, that in case our we face existential threat, then we would not hesitate to use a nuclear weapon first in the war theater. Exactly. And this is quite logical for a country of a smaller size, both in terms of land, population, as well as defense expenditure and defense resources. So we have, within our lower or lesser resources, managed to blunt India, and also, effectively able to defeat, because it's not that I am or Pakistani side is saying this. You go to any international media, and even, big media houses like CNN, BBC, Le Monde, the French newspaper, all have given Yes, uh, this assessment that Pakistan has come up very successful in this engagement, and India was found wanting in all domains. Sir, I have a question from you, particularly about the diplomacy that was involved. Track 1 and Track 2, these are conventionally, we've seen these in play when it comes to Pakistan and India. Do you believe that they're sufficient to this date? Actually, you see, the last round of composite dialogue that Pakistan and India had was in 2012. And in December 2010, it was Congress government at that time, and they accused Pakistan of cross border violation in the Kashmir region, and they suspended the dialogue process. And basically, I was in New Delhi at that time, and it was our assessment that because the election year is coming in 2014, and even Congress wanted to build some constituency on the basis of India-Pakistan conflict and a blame game, and that is why they are raising this hype, because there was no evidence of these charges that they were giving, that Pakistani soldiers had crossed over the line of control and sweared the heads of 2 Indian soldiers and taken away as trophy. There wasn't any evidence, like always, for that. But then when the BJP government came in 2014, since then also they did not have any composite dialogue process. There was one meeting in which, in regard to the Afghanistan peace process in Pakistan, where the Indian External Affairs Minister came, and she insisted that instead of the compositive dialogue, we should rename it as comprehensive dialogue. So we agreed to that. We were not so much into the nomenclature. However, I must quickly add that it was actually India who had suggested the compositive dialogue process in the first place when we were starting it. Exactly. And so since that time on, from 2013 January onwards, we haven't had any bilateral dialogue process. And there are some backdoor channels that have been off and on, but no significant result could be achieved on in those dialogue. And it is basically, because of the Hindutva RSS dominated mindset that India has at the moment, which
thrives on building conflict Yes, with Pakistan. exactly. Exactly. Sir Farooq, sir, when we talk about the ceasefire, I would matter of fact मैं प्रेफर करूंगा कि अगर इसका जवाब सर आप उर्दू में दें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके हवाले से बात कर रहे हैं कि इस सीज फायर को आप किस हद तक क्रेडिबल समझते हैं, और क्या समझते हैं कि ये सीज फायर क्या प्रोलॉन्ग करेगा और ये दोनों स्टेट्स के दरमियान पीस का बायस बन सकता है। देखिए, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट एंड आई बिलीव दैट द टू साइड्स दैट हैव एग्रीड टू द सीज, जो दोनों साइड्स ने एग्री किया है सीज फायर के लिए, और एक तरह से जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ट्वीट में कहा तो उनकी अंडर द ऑस्पिसीज ऑफ द यूएस गवर्नमेंट, तो आई हैव ऑल रीजंस टू बिलीव कि ये एग्जिस्ट करेगा। दूसरी एग्जिस्ट करने की वजह गालिबन ये भी है कि हमने देखा है कि इस जो क्राइसिस थी या जो कॉन्फ्लिक्ट था, आर्म कॉन्फ्लिक्ट, इसका नतीजा जो है इंडिया के लिए अच्छा नहीं था। उनकी मिलिट्री जो है वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्ट कमिंग्स हैं जो सामने आई हैं। उनकी प्रेस्टीज जो है वो इफेक्ट हुई है। तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि बहुत क्विक सक्सेशन में दोबारा ये तमाम कुछ उनके साथ हो, और अगर वो दोबारा कोई कोशिश करेंगे तो गालिबन यही चीज़ जो है दोबारा भी यही पेश आएगा। तो वो उनकी लॉस ऑफ फेस, डिस्क्रेडिटिंग ऑफ द आर्म फोर्सेस, जो इंटरनली उनके जो अब प्रॉब्ली जो होता है हमेशा इस किस्म के आर्म कॉन्फ्लिक्ट में, जब आप व्हेन यू लूज फेस, व्हेन द आर्म फोर्सेस लूज फेस, तो एक इंटरनल टर्मोइल भी होता है, एंड वी कैन सी अ वेरी वीकेंड गवर्नमेंट, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली इलेक्शंस में, ये इलेक्शन से पहले में भी कोई और चेंज भी आए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया अफोर्ड कर सकता है कोई और adventurism within that short span of time. So I have all my hopes that it's going to continue. If it does not, however, then we are capable to give the same kind of beating to Indians again. बिल्कुल ठीक है सर। सर, कमिंग टू एम्बेसडर बाबर अमीन, सर आपने सर्व किया है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन एससीओ एंड अदर मल्टीलैटरल फोरम्स, ईसीओ एंड अदर्स। सो आप समझते हैं कि ये जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, इनको भी परमानेंट पीस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, थैंक यू वेरी मच। ये आपका सवाल वैलिड है, मगर मेरा ख्याल में कि ये जो दो फोरम आपने किए हैं मेंशन, इनमें ये इस चीज़ को फॉर्मली नहीं एजिटेट किया जा सकता, क्योंकि पहली बात कि एससीओ जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जब उसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान मेंबर बन रहे थे, तो उस वक्त जो मेंबरान थे उनको इस चीज़ का खदशा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अपनी आपसी जो लड़ाई है वो इस फोरम पे ना ले आए, और उसकी वजह से कि फोरम का कि बाकी चीज़ें भी तातुल में पड़ जाएं, जैसे कि सार्क का हशर इंडिया ने किया है। तो उस वजह से उन्होंने हमें से एक अंडरस्टैंडिंग ली दोनों मुल्कों से कि आप बायलैटरल कंटेंशियस इश्यूज को, जो है दो तरफा आपस की मसाइल हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, उसको इस फोरम पे नहीं लाएंगे। लेकिन बाहर कैफ जब भी कोई हमारी मीटिंग होती है तो हम उस को से फ़ायदा उठा के, जो मेंबरान हैं हमारे तकरीबन सारे ही इंडिया के अलावा लाइक माइंडेड मेंबरान हैं उसके, तो उनको हम साइड लाइन मीटिंग्स में ब्रीफ करते हैं बायलैटरल इश्यूज पे भी, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो मामलात हैं उन पे भी ब्रीफ करते हैं। तो उस हद तक तो इसका है। ईसीओ जो है वो भी क्योंकि उसमें इंडिया मेंबर नहीं है, तो उसमें भी जो है उस तरह से इस इशू को लाना प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उसमें फिर ये है कि अगर आप एक इशू को लाते हैं, फिर बाकी भी सारे, हर मुल्क कहता है कि जी जो है हमारा भी फलां के साथ ये मसला है, फलां के साथ। तो क्योंकि वो बामी इक्तसादी ताउन की तंजीम है, तो इसलिए और अमूमन जो झगड़े होते हैं वो टेरिटोरियल इश्यूज पे होते हैं, या किसी जैसे हमारा पानी के पे भी इशू है, तो इस तरह ये मामलात फिर वो उसमें डिस्कस नहीं होते, क्योंकि बाकी मेंबरों का उससे ताल्लुक नहीं होता है। सार्क भी में भी यही असूल कार फरमा है। तो अलबत्ता जो ज़्यादा मेरे ख्याल में मामलात को जो लाइमलाइट में लाने की ज़रूरत है, उसमें मेरे ख्याल में दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हम तमाम ममालिक से, चाहे हमारे उससे ताल्लुकात की नौयत क्या भी हो, जो भी हमारी दो तरफा बातचीत हो, उसमें जो हिंदुस्तान की तरफ से
वॉर की तरफ पेशकदमी और छोटे छोटे बातों को, अनप्रूव्ड बातों को, और विदाउट कोई सबूत दिए, क्योंकि हिंदुस्तान अब अपने आप को समझ रहा है कि मैं एक ऐसी लीग में आ गऊं कि मुझे किसी को जो है कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, मैंने जो कहा वही सच है और उसी को सारी दुनिया को बिलीव करना चाहिए। और किसी हद तक ये माजी में होता भी रहा है, लेकिन इस दफा जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि बार बार जो है धोखा खाने के बाद उनको भी पता लगे कि इंडिया जो है वो झूठ पे अपना जो है बयानिया बनाता है, और उसको एक जवाब बना के तो पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन करता है या और दुनिया को मिसलीड करता है। तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। अगर बाद में अगर आप टाइम समझेंगे तो मैं फॉल्स फ्लैग के जो वाकयात इंडिया ने किए हैं, जिसमें लोगों को उन्होंने रिसीव किया और लोगों को फिर पता भी लग गया बाद में कि उनके साथ ये जो है धोखाधड़ी हुई थी, तो इस वजह से इस दफा वो उस तरह से किसी मुल्क ने हिंदुस्तान को उसके इस बयानिए पर सपोर्ट नहीं किया। ये लोगों ने ज़रूर कहा कि दहशतगर्दी के हम खिलाफ है और हिंदुस्तान के साथ जो है हमारी सिम्पतीज हैं और हम उनके साथ हैं दहशतगर्दी के खिलाफ पे जंग पे, पर किसी ने फिंगर पॉइंटिंग पाकिस्तान की तरफ नहीं की, जैसे कि माजी में होता रहा है कि उधर इंडिया ने बयान दिया, उधर जो है उसके जो अलाइज और लाइक माइंडेड कंट्रीज थे उन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया उसके कहने पे। तो अब हमें तमाम जितने हमारे दोस्त ममालिक हैं या जिनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं, उनसे जब मुलाकात हो तो ये ज़रूरी है कि आप उनको ब्रीफ करें। और इसमें ख़ास तौर पे जो मैं पॉइंट्स दूंगा, एक तो कश्मीर का मसला तो है ही है, लेकिन इसके साथ इंडस वाटर ट्रीटी को हमें जो है बहुत ज़ोर से पुरजोर तरीके से इसको उठाना चाहिए। और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी अभी हम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, तो इसको एक सेपरेटली जो है इंडस वाटर ट्रीटी को जो उन्होंने जो है सस्पेंड कर दिया या हेल्ड इन अबेयंस कर दिया है, तो इस और साथ ही उन्होंने जो है हमारा पानी रोकना शुरू कर दिया है और बगैर बताए जो है पानी छोड़ना भी शुरू कर दिया, जो पहले से उनकी प्रैक्टिस भी है, मगर अब वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ज़्यादा आजकल कर रहे हैं। तो ये आप बात इसको अगर इस मौके पे हमने चेक ना किया तो ये आगे बहुत बढ़ेगी। बिल्कुल सर। तो लेकिन इस मामले पे मैं मजीद रोशनी डालना चाहूंगा, अगर बाद में आप किसी बिल्कुल और सर, सवाल के अंदर जरूर करेंगे। जरूर जरूर सर। सर फारूक सर, इसमें अभी जैसा कि रिसेंटली वी हैव गॉटन टू नो कि जो दोनों डीजीएमओस ने बात करनी थी, दे हैव नॉट टॉक टू ईच अदर एंड इट हैज बीन पोस्टपोन्ड। सो इस डीजीएमओस की जो सर मीटिंग होती है, बिकॉज यू हैव अ ह्यूज करियर इन द डिफेंस द एस्टैब्लिशमेंट, डीजीएमओस की जो इस तरह की मीटिंग होती है, इसमें क्या नेगोशिएशंस पॉसिबल होती हैं और किस अंदाज से नेगोशिएशंस की जाती देखें, देर आर 3 लेवल्स जब भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन की हम बात करते हैं, और उसमें अगर आप ग्रैंड स्ट्रेटजी लगा लें तो जो भी नेशनल जो आपका एक बिहेवियर होता है, उसमें देर इज अ ग्रैंड स्ट्रेटजिक लेवल जो कि पॉलिटिकल लेवल होता है। उसके बाद देन देर इज अ स्ट्रेटजिक लेवल एंड देन ऑपरेशनल एंड देन टेक्टिकल लेवल। तो डीजीएमओस की जो बात होती है वो ऑपरेशनल और टेक्टिकल लेवल पर होती है। है? इसका ये मतलब नहीं है कि चीज़ें जो हैं वो रुक गई हैं, ये क्या, बिकॉज ये मैं जिस तरह आपको बताया टेक्टिकल एंड ऑपरेशनल लेवल, बट एट द स्ट्रेटजिक लेवल एंड एट द ग्रैंड स्ट्रेटजिक लेवल द agreement has been made, the ceasefire has been established, it is in place, and probably we're going to move on. ये बीच में थोड़े थोड़े जो चीज़ें आती हैं, हिंड्रेंसेज आती हैं, ये होती हैं, ये पोस्टरिंग भी होती है, कुछ और वजूहत भी होती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इट शुड बी टेकन एज अ बिग थिंग, एंड आई डोंट थिंक इट विल बी अ शो स्टॉपर फॉर द फ्यूचर। Totally understand, sir. Sir, actually, we're running out of time. I would have continued this very important discussion, very fruitful discussion. I'm really thankful to both of you for joining us. I would hope to have you again on our platform on some different sort of a topic. Thank you so very much, Sir Farooq. Thank you so very much, Sir Babar Amin. It was a pleasure to have you both. Thank you. Thank you very Pleasure for much me for as well. inviting us. Thank you. Thank Thank you. you.